Namaste, Ganesh. Wonderful. I am unable to see your comments because I'm sitting a bit away from the iPad and it's a bit difficult to read from a distance. Okay, Namaste, everybody. Love you, everybody. I'm just reading the Namastes and I'm unable to read your names, but happy to see all of you one more time. 1176. This is 1176th Happy Minds, and wonderful to see all of you. So if somebody's from Indore, if you're joining in from different parts of the country, you can just type in that you're attending it for the first time and the city you're attending from. So I'll come to know you're from which city. Lovely. Last HM, I was in this place called Mulshi, and that was another beautiful location जहाँ से हमने Happy Minds लिया. And this HM is from the pink city of Jaipur, and we've been here for last few days with family and friends. And a few days back, हम लोग थे सवाई माधोपुर में, so it's kind of a Rajasthan tour. It's a beautiful, lovely family time we are having, and I'm sure you all also would be looking forward to the new year and the year coming to an end sometime with your family, the weekend, Saturday, Sunday, and looking forward to some celebrations tomorrow night. Anji, where is the chat gone here? Okay, I am unable to operate. Okay, chat is here. Chal. First time from Pune. Good. Stay alive and stay happy. Chalo. All those who have joined in on YouTube, namaste and welcome to Happy Minds. This is Happy Minds number 1176, and excited to see you all this very morning on this is a very if you were to see from where I'm sitting, मैं यहाँ बैठा हूँ तो सामने पूरा fog है, and from the hotel window which I can see it's a cold wintry morning here in north in Jaipur, and winters का अलग ही एक आनंद है जयपुर में. So in fact winters का अलग ही आनंद है in North India. Anywhere you go in North India, you will kind of enjoy the winter weather. And since I'm from north, so it's kind of nostalgic, feeling a bit connected to the life I've lived in the past. Chaliye, lovely. आज का HM, I was thinking about what to share with all of you, and फिर एक realization आया कि let me speak about one beautiful thing which I've been speaking time and again with people, but I think अगर आप मेरे से पूछोगे, it is one of the most profound things which I have shared with people. So let me share this with you one more time. Those who have heard me on this subject, let it be a repetition. जो शायद पहली बार सुन रहे हैं, I'm sure you will connect it very deep today with what I'm saying. There is this statement which I've always lived by to the best of my ability, and I've spoken on this statement time and again with a whole lot of people. And the statement is that it's never the fact. It's never the fact which makes a difference. It's always the realization of the fact that makes a difference. So आप कितना भी facts को लेके बैठे सोचें, लेकिन जब तक उस facts का एहसास नहीं होगा, तब तक जो है आपकी लाइफ में कुछ असर नहीं होगा. The facts can be many. In fact, I always feel that facts जो होते हैं ना, ये lifeless होते हैं. इनमें जान नहीं होती, बेजान होते हैं. जब हम उनका एहसास करते हैं, जब उनको हम रियलाइज करते हैं उन फैक्ट्स को, तो वो फैक्ट्स जो है उसमें जान आ जाती है, फिर हमारे लिए वो कुछ करने लायक बन जाते हैं. The fact can be in your own lives. If you were to see, the fact is that this is the end of the year, and 2023 is about to leave us, or we are about to leave 2023. Either ways, ये फैक्ट है ना. फैक्ट है कि हमने 365 दिन हमने जी लिए पिछले एक साल के अंदर. ये भी फैक्ट है. Fact है कि the body is not the same as it was 1 year back. ये भी fact है. Fact is that children are growing up fast, and शायद हम उनको उतना time नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था. ये भी एक fact है. The fact can be on the business side that maybe some client is upset and angry, and maybe the client has left us or was thinking of leaving us. ये भी एक fact है. The fact can be parents at home are not getting any younger. They're getting older day by day. ये एक fact है.
एंड ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होंगे आपके बॉडी को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके रिश्तों को लेके, आपके जीने के तरीकों को लेके, आपके कम्युनिकेशन को लेके, बहुत सारे फैक्ट्स। लेकिन वो फैक्ट्स जो है ना, वो निर्जीव है, उनमें जान नहीं है, लाइफलेस है। और उनके अंदर लाइफ लाता है हमारा उन फैक्ट्स को रियलाइज करना, हमारा उन फैक्ट्स का एहसास करना। आई रिमेम्बर, आज से करीब 18-20 साल पहले की बात है, वन ऑफ द क्रिसेलियंस ही कॉल्ड ऑन मी एंड 2004-5 की बात है, वन ऑफ द क्रिसेलियंस कॉल्ड ऑन मी, हिज रिलेटिव वाज नॉट वेल, आई थिंक वन ऑफ हिज father's brother was not well, and he says sir वो हॉस्पिटल में है, he's got a heart problem and आप आइए और उनसे बात करिए। I had no idea what to talk because uh, but उसने कहा, इतने प्यार से उसने बुलाया, so I was there and he says मैंने कहा बात क्या करनी है, he's in the hospital, let him rest, doctors are taking care of him, मुझे क्यों बुला रहे? नहीं, आप आके बस उनसे 5 मिनट उनसे बात कर लो। And that was my first experience of meeting, talking, and being in a situation where you had to inspire somebody who's not well and things like that. तो जब मैं उनसे मिला और बात करते करते ऐसी, I wanted to make it light, कि didn't want him to remember his situation, the medical condition he's in. तो मैंने बात करते करते थोड़ी बात आगे बढ़ी, and then I happened to ask him about his dreams and about his future. So how do you make somebody feel good? So you talk about the future as to what he uh, wants to achieve or what he wants to do, aspirations क्या हैं, and somewhere बात करते करते उन्होंने कहा कि अब क्या सपने देखने हैं, अभी तो कुछ साल ही रह गए हैं। तो मैंने कहा मतलब कि हाँ, 60-65 की उम्र पे है अभी, मतलब by the time I'm 60-65 it's going to be over. I said आप अभी कितने साल की हो? He said around 45. So that time 20 years ago he was 45 and he says 60 is what I aim to live. And I said it's a very small age which you are thinking of living. Because उनको कह नहीं पाया because वो उस सिचुएशन में थे। तो मैंने कहा how do I make him understand that आपने अपना ही कैप इतना छोटा लगा के रखा है कि how long you want to live, बट वो रियलाइज नहीं हो रहा है उनको। फैक्ट इज कि उन्होंने अपना कैप खुद मेंटली ये लगा के रखा है कि आई विल नॉट लिव बियॉन्ड 60। तो आई जस्ट मेड हिम अंडरस्टैंड, आई सेड यू आर 45, दिस मींस 15 more years, and 15 more years into 12 months is 180 months. तो आप कह रहे हो कि आप सिर्फ 180 महीना जियोगे, एंड द मोमेंट दिस sunk in, एक उनको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ 180 महीने की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे व्हाई सच अ, आई एम नॉट गॉड, नीदर यू आर गॉड। हम लोग तो नहीं तय कर सकते हम कितना लंबा जिएंगे, लेकिन हम एस्पिरेशन तो रख सकते हैं कि हमें कितना लंबा जीना है। वी कैन एस्पायर टू लिव 75, 80, 85, एंड उसके लिए हम अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं कि वी रिमेन फिट इनफ टू लिव एटलीस्ट 75, 80। एंड आई सेड आप जो ये लेवल आपने तय किया है, दिस इज सच अ लो लेवल, और ये सिर्फ 180 महीने की बात कर रहे हो। एंड आफ्टर सम इयर्स आई हैपेंड टू मीट हिम अगेन एंड ही सेज वो आपकी बात मुझे याद रही कि मैंने तो अपने लाइफ को 180 महीने का कैप दे दिया है। एंड इट हिट मी, ही सेज आई रियलाइज okay, I need to expand this cap. I don't know how long I'll live, but at least I will continue my life as to the best of my ability. I'll stay fit. तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि फैक्ट्स तो बहुत है, लेकिन फैक्ट्स का रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक उन फैक्ट्स का हम पे असर नहीं होगा। हकीकत एक है और उसका एहसास, जब तक ये दोनों साथ हैं कि उनका हकीकत और फैक्ट्स या हकीकत और रियलाइजेशन तो सब साथ होते हैं, उसका हम पे असर होता है। आप देखो ना, इनिशियली सम ऑफ यू व्हेन यू वर इन योर कोर्टशिप डेज, जब आप आई डोंट नो व्हिच एज ग्रुप यू आर लिसनिंग टू मी, आप में से कुछ लोग जो है मे बी you're in the age of 20s and 30s, some of you are in your 40s 50s, I don't know what age group you're in, but जब आप in your 20s में थे, जब आप you had a crush or you fell in love with somebody, तो आप फैक्ट था कि you were in love, और आपको उस फैक्ट का एहसास भी बहुत था। तो उस एहसास में क्या हुआ, आपने you saw that person in your imagination,
मोर देन एनीथिंग एल्स। आप मार्केट जाते थे तो आपके मन में आता था कि मैं इसके लिए कुछ खरीद लूं। आप पिक्चर देखते थे तो पिक्चर में आपको वो इंसान दिखता था। आप बातें करते थे तो बातें करते करते वो इंसान याद आता था। सो द फैक्ट वाज दैट यू लव दिस पर्सन, एंड द रियलाइजेशन आल्सो वाज वेरी मच देयर। और उस चक्कर में कि फैक्ट और रियलाइजेशन के हिसाब से फिर आप बहुत कुछ करते गए। तो you bought flowers, or you went out for dinner, you felt this time is very precious. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय निकला आपके रिश्ते में। तो फैक्ट तो वही रहा कि आप प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन रियलाइजेशन कम 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 होते रहा। फैक्ट वही है कि आप अभी भी प्यार करते हो, लेकिन उसका एहसास शायद थोड़ा कम 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 हो रहा है। एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो देयर आर पीपल हु आर लिविंग अ लाइफ जहां पर फैक्ट भी है और उसका रियलाइजेशन भी है। And there are people who are living the lives where the fact is there, but realization happens after some time. And there are people जहां पर फैक्ट है और रियलाइजेशन ही नहीं है, तो उस फैक्ट से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि दिस ईयर इज about to come to an end, another few days, and this year is going to come to an end, and we are going to go into another year. And कल शाम को बड़ी बातें होंगी, हैप्पी न्यू ईयर होगा, चीयर्स होगा, and we will all set our resolutions. But the question to all of us is in front of us, okay, what is new about this year? Are we saying it's a happy new year, or are we going to go into this year with a thought, with this realization that I got to be new in this year, that I got to be new? It cannot be the same old me. It cannot be the same old me. It cannot be the same old me in this new year. So नया साल में मैं पुराना, it will not make sense. So we have to go with this realization that this new year also is expecting that I bring a newer version of me. तो उसमें कुछ बातें सोचा आज करते हैं आपके साथ कि what is that new thing which you want to take into this new year. So again, I'll just repeat again what I shared. I said facts जो होते हैं, facts they don't make much of a difference. It is the realization of the fact that makes a difference. And the sooner you have a realization, the sooner you can do something about it. The fact is that this body is not the same as it was 1 year back. Am I right? उसका अगर एहसास होता है आपको कि यार this body is not the same, and this body will not remain the same as we age. जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, एक साल पे, and we have heard this so many times कि एक साल और निकल गया, और ऐसे करते करते समय तो निकलता रहेगा। एंड ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू अ फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमारा फाइनल गोल है, जहां पर हमें जाना है, एंड दैट्स डेथ। वहां तो जा ही रहे हम लोग। ये जब रियलाइजेशन होगा तो आपको समझ में आएगा कि समय उतना नहीं है जितना पहले था, हर साल एक साल कम हो रहा है। जब ये रियलाइजेशन होगा, मे बी दैट रियलाइजेशन विल मेक यू लिव योर लाइफ इन अ बेटर। व्हेन दिस रियलाइजेशन इज नॉट देयर, द फैक्ट दैट वी आर losing time, this fact does not mean anything to us. It does not mean anything to us. So before I move on, just want you to realize that we consumed 1 year of our lives. Last 1 year. 365 days, 364 अगर आज का पकड़ूं मैं. Just write down. Don't write in the chat box here. Write in some other maybe book of yours or copy of yours or maybe on your phone. Write down what has been the greatest achievement in the last 1 year of yours. What has been the greatest achievement of yours in the last 1 year? चलो, let me make you realize one thing. कि पिछले एक साल में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? लिखो. What has been the biggest? By the way, sorry for that. What has been the biggest achievement of? What has been the biggest achievement of yours? Likho. And then once you have written that, now in the chat box,
or maybe you can raise your hand. Now share with me what you felt. Share with me what you realized. मुझसे share करो आपको क्या एहसास हुआ when you answered this point, that this was the biggest achievement of my life. हाँ जी. Sad. Ganesh says sad. Okay. Just write down what you felt. एहसास हुआ. 365 दिन हमने यूज कर लिए. 365 दिन खाना खाया. 365 दिन लोगों का प्यार लिया. 365 दिन लोगों का टाइम लिया. 365 दिन जो है इस धरती पे हम रहे. तो हमने इतना कंज्यूम किया पिछले 365 दिन. तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ये सब कंज्यूम करने के बाद व्हाट हैज बीन द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर्स, वो लिखो. और उसको लिखते लिखते आपको क्या एहसास हुआ. एंड वो एहसास can be different for different people. Could not achieve as per the skills. Not much. Just one thing happened. I got promoted. Life should be lived. I realized I realized what is earned in the year, and also realized what more can be earned. Attended Happy Minds offline. It's magical. The greatest achievement of 2023. Happy Minds attend kiya. Oh, love you for this. Life 360 course. Okay. Love you for that. What has been the biggest achievement of yours? आप वो लिखो. पूछो अपने आप से, मेरा क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा पिछले 365 दिन में. इतना सब ना. if suppose you had a team member of yours और आप उसको सैलरी दे रहे होते पूरा साल भर की, और फिर उसके बाद आप उसका अप्रेजल करते, कहते आप उसका रिव्यू करते, चल भाई तेरे को 365 दिन सैलरी दी, तेरे को 365 दिन काम पे रखा, नाउ टेल मी व्हाट यू डिड द लास्ट 365 days. और फिर वो आपको बोलता कि मैंने ये किया या मैंने ये नहीं किया या ये नहीं हो पाया. आई एम जस्ट सेइंग, you ask yourself, you have given yourself 365 days of everything. You have consumed the love of people. लोगों ने प्यार किया आपको, आपने वो कंज्यूम किया. आपको खाना खिलाया लोग घर में, वो आपने खाना खाया. आपने टाइम लिया लोगों का, आपने इस देश का रिसोर्सेज को कंज्यूम किया. क्या आपने अचीव किया. एंड वो लिखते लिखते आपको क्या एहसास हुआ. Actually, because of this, we are able to realize lots of facts in life. Okay, able to manage financial loss. Tell me what you felt, what you realized. Most of you, I don't know about, I cannot say all, but most of you, एक बात तो पक्की है, you would have realized. Most of you. अरे यार, we could have done a lot more. If that's the answer for most of you, then you can just type a Y. Most of you would have realized, yeah, we could have done a lot more. If that's the feeling which you have got, then type a Y or a yes. If you feel you could have done a lot more, then type a yes. And this is such an important realization. You know that? Such an important realization. Those of you listening to me on YouTube, though I'm not seeing your comments live, but you can also type in yes there. Yes, I realized I could have done a lot more. You can just type in yes there. At least some action from my side to reaffirm, to confirm कि हाँ ये बात सही है. The fact is हम बहुत कुछ कर सकते थे. Fact तो है ना. लेकिन जब उसका रियलाइजेशन होता है, तब हम शायद कुछ करने योग्य बनते हैं. Thank you for sharing this, all of you. Now, let me just connect for the year which is to come, so that at least next year, when somebody was to ask you,
if next year somebody is to meet you, next year somebody is going to, or you're going to meet somebody and tell how this year was or how 2024 was for you, at least next year तो ऐसा होना चाहिए कि यार I did to the best of my ability what I could do. ये आंसर अगर आप पकड़ के बैठो आज के सेशन के बाद, आज के हैप्पी माइंड्स के बाद, then anybody who meets me or anybody who questions me, who asks me next year, मैं 24/24 ऐसा जीऊंगा कि मैं उसको बोल पाऊं कि यार it was a great year, I could do majority of what I thought I could do. I lived a life in such a way that I feel यार मैं संतुष्ट हूं. आपके पास ये आंसर नहीं होना चाहिए यार I could have done a lot more, यार I could have done a lot more. So what I want you to hold on now from what I'm saying is, let us take a resolution जो आप कल लेने वाले हो, जो आप कल जोश में या होश में या बेहोशी में लेने वाले हो, that 2024 is going to be this year, 2024 में ऐसा करने वाला हूं, 2024 में ये करने वाला हूं. Forget about all that. वो तो जो goals लिखो, जो aspiration करो, that is your choice. But I'm just saying, listening to me after in this Happy Minds, let us all collectively make one resolution. And the resolution is, let 2024 be a year of no regrets. Let 2024 be a year of no regrets. And the more conscious you are about this, that 2024 में regrets नहीं, तो मैं अपने आप को push करूंगा वो जीने में जो मुझे जीना चाहिए. There's nothing called living your life 100% to what you thought you should live. But it can't be that we are far away from 100% and we kind of have a pile of guilt with us. तो एक गिल्टफुल लाइफ भी तो नहीं होनी चाहिए ना, एक रिग्रेटफुल लाइफ तो भी नहीं होनी चाहिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिग्रेट्स. कि बचपन में रिग्रेट किया यार, स्कूल में हम लोग थे तो ड्रामेटिक्स में पार्ट नहीं किया, अरे एलिब्यूशन में पार्ट नहीं किया, अरे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, अरे मस्ती नहीं करी, अरे पढ़ाई अच्छी नहीं करी, अरे कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. चलो ठीक है, स्कूल हो गया, स्कूल के बाद कॉलेज आए तो कॉलेज में वही लाइफ वही जिंदगी, अरे यार ये नहीं किया, उससे बात नहीं करी, प्लेसमेंट कमेटी में नहीं गए, कोई किसी को प्रपोजल नहीं दिया, कोई लड़की नहीं पटी, कोई लड़का नहीं पटा, वहां पर भी रिग्रेट की दुकान. वहां से आप बाहर निकले, आप काम पे लगे, अरे आई शुड हैव वर्क मोर, आई शुड हैव स्टडीड मोर, आई शुड हैव अपग्रेडेड मोर इन माय करियर. वहां पर भी आपका रिग्रेट्स की दुकान है. फिर आपने कहा कि यू गॉट मैरिड एंड यू गॉट so you again have a regret, I could not give time to my spouse the way I should have given. वहां भी रिग्रेट की दुकान है. फिर बच्चा हो गया, बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाए, वो बच्चा बड़ा हो गया, वहां भी रिग्रेट की दुकान है. तो कुछ लोगों की दुकान जो है ना, वो इतनी रिग्रेट की है कि उनको इतना अफसोस होता है from what they could not do, कि by the time they are about to die, they become a wholesale shop of regrets. अफसोस का होलसेल का दुकान होता है. वो दुकान छोड़ो, मुझे लगता है कुछ लोग का तो अफसोस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है. दे ओनली मैन्युफैक्चर अफसोस, दे ओनली मैन्युफैक्चर रिग्रेट्स. कि उनका शटर खोलो तो क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट, रिग्रेट निकल रहा है बाहर. That's how they have lived their life. So I'm just saying, I don't know what age group you all are in, but let's not have a life of regrets. You can't have all that which you aspire for, but we can't have a life where nothing is achieved or nothing much is achieved. At least the yearning should be there. At least the action should be there towards that yearning of ours. तो आपके regrets कम होते. I think the worst life, the biggest tragedy of our life for all of us would be to live a life of regrets. कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लिखा लिंक्डइन में. अच्छा, मेरे साथ हो कि नहीं हो आप लोग? हाँ जी, ग्रेट, प्रेजेंट सर. हाँ, स्टे विद मी. चलो, हाँ. तो I wrote a, चलो, thank you for staying with me.
कुछ दिन पहले मैंने एक नोट लिखा on I shared on LinkedIn that during my somewhere in 97 I came to the city of Pune, and then I wrote a small brief about my coming to the city of Pune. Initial years were full of struggle, and my typical day would be, um, get up and then be on the field and then work and then come back late night. तो क्या होता है, एक एज भी थी, स्ट्रगल भी कर रहे थे अपना आपको स्टैब्लिश करने के लिए. I tried various businesses one after the other, and then I was not getting the footing which I wanted. And उसका भी एक मार मारी थी. एंड फिर एक जुनून भी था, कुछ तो अच्छा करना है. वो अच्छा क्या समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो अच्छा करना है. तो आपको सेटल भी होना है, उसके ऊपर ये पागलपन की कुछ तो लाइफ चेंजिंग, वर्ल्ड चेंजिंग होना चाहिए, वो एक फतूर सर में बैठा हुआ है. And so that would stretch me beyond my normal working hours. So I would kind of be so tied up that I didn't have time for anything. और उसमें फिर मेरी शादी हो गई. And then my life continued the way it was, where you're out of home and then you're there working the whole day, then late night meetings with a few friends, and then my mentor, about मेरे एक फर्स्ट मेंटर थे प्रोफेसर श्याम मानव. उनके साथ लेट नाइट मीटिंग्स हो रही है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है. एंड एज अ रिजल्ट शादी के 1.5 साल हो गया. एंड देन आई रियलाइज दैट एट होम थिंग्स आर नॉट ओके. आई थिंक आई एम स्ट्रेचिंग थिंग्स beyond what I should stretch. And I must have shared this with my mentor, Professor Manav से share हुआ. तो उन्होंने कहा, very logical guy, very upfront guy. तो उन्होंने मुझे बोला, मनीष, there's nothing wrong in the way you're living your life. I remember his words even till today. कोई गलत नहीं है जो जिस ढंग से तुम जिंदगी जी रहे हो. बस तुमने एक गलती कर दी कि अगर तुमने ऐसी जिंदगी जीनी थी तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी. And all of whatever my age was, in my late 20s, I was there, and I just happened to listen to him, and he says, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी. Because एक रोल की कामयाबी cannot be at the altar of sacrifice of another role. एक रोल को अच्छा बनाने के लिए दूसरे रोल को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते. तो आपने शादी कर ली और आप उस रोल को अच्छा नहीं निभा रहे हो, तो इवन इफ यू गेट सक्सेस इन सम अदर रोल, इट डजंट मैटर. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, 25 साल पहले जो मैंने बात सुनी, वो बात आज भी मेरे मन में है. इन अ वेरी, इट वाज एच्ड. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स टिल टुडे, तब से लेके आज तक, व्हेन आई लुक बैक, I don't have regrets about not being there for the family. I don't have any regrets for not standing up or not being there for any family occasion. I was always there. Out of 100, you can give me 99% marks. I was there for my family events. I was there for all where the family needed me. And even at the cost of business, at the cost of work. तो मैंने कहा, अगर काम भी करना है तो फैमिली को भी टाइम देना है. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स वर्क एंड लाइफ. ये अलग चीज नहीं है, वर्क लाइफ का हिस्सा है. तो इट्स वर्क एंड पर्सनल लाइफ. तो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरा बिजनेस लाइफ दोनों का बैलेंस करूंगा. तो जितना काम जरूरी है उतना ये लाइफ भी जरूरी है. तो कहीं पर काम का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो मैं करूंगा, बिकॉज काम तो जितना भी करो उतना कम है. एंड आई स्टॉप डूइंग असाइनमेंट्स ऑन सैटरडेज एंड संडेज, mostly on Sundays. And I stopped doing it. And there are so many times, my team would come and tell me कि सर ये असाइनमेंट आया है, ये टॉक आया है, ये पावर टॉक है, ये संडेस को नहीं करेंगे. And it was difficult initially. Who doesn't need money? Who doesn't need more business? But I took a call 25 years back. And I said, no, one role success cannot be at the cost of another role. It cannot. I don't want to have regrets. And I also realized all these years, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत से लोगों से. मैंने बहुत से लोगों की कहानियां पढ़ी है, मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज सुने. ऑल ग्रेट गाइज, सबके इंटरव्यूज सुने, सबकी कहानियां सुनी, पढ़े. मुझे आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं मिला, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिला, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो एक सर्टेन लेवल में पहुंचा हो और उसने कहा हो
कि उसने बिफोर ही डाइड और बिफोर ही वाज टू लीव दिस वर्ल्ड, उसने जाने से पहले कहा, आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम एट वर्क, आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम एट ऑफिस. अक्सर लोगों ने ये कहा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग गाइज. अक्सर उन लोगों ने जाते समय या लिखते समय या दुनिया छोड़ते समय लोगों ने कहा, आई विश आई कुड हैव गिवन मोर टाइम to my family. I wish I could have given more time to see this world. I wish I could have given more time for things which mattered most. So work was not the thing which mattered the most to them. It mattered, but other things also mattered. क्योंकि मरने से पहले आदमी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा कहते हैं. So all these guys who have lived before us, wise guys, great guys, big guys, not many, they said, I wish I could spend more time at work. And I'm happy I could read about them. I'm happy I could understand from them. And I decided, even at the cost of work, even at the cost of some loss in revenue and business, I would maintain that balance. No regrets. मुझे अफसोस की दुकान नहीं खोलनी है. और इनिशियली मालूम ही नहीं पड़ता है यार, क्योंकि हम जी रहे होते हैं ना. सो वी आर लिविंग, वी आर काइंड ऑफ मूविंग अलोंग. ये तो हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, जब एक, जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोज इन पुणे, आप सिंहगढ़ चढ़ते हो, तो आप यू क्लाइंबिंग दैट हिल. दोज आर इन अदर एरियाज, यू विल हैव योर ओन हिल्स व्हिच यू क्लाइंब. सो आप क्या करते हो, थोड़े समय के चलने के बाद आप रुकते हो, थमते हो, थोड़ा सांस लेते हो, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो, एंड देन यू रियलाइज दैट, oh, this is the place you have come to. So from there you see the valley, from there you see the landscape, and you feel good about it. लेकिन जब आप चढ़ रहे होते हो ना ऐसा, तो आपको ना वैली दिखती है, ना आपको वो सीन दिखता है, ना आपको वो सुंदरता दिखती है, आपको सिर्फ चढ़ाई दिखती है. आप चढ़ते रहते हो, चढ़ते रहते हो. तो बहुत से लोग जो है लाइफ में वो चढ़ते जा रहे हैं. दे नॉट टेकिंग अ पॉज, दे नॉट टेकिंग अ पॉज टू सिट, नॉट दे नॉट टेकिंग अ पॉज टू रियलाइज. और लाइफ ऐसे ही चलती जा रही है. एंड देन वन डे व्हेन दे सिट, they realize they have lost a lot of things. तो मेरा आपसे ही कहना है, let 2024, बाकी सारे जो आप गोल्स लिखोगे, एस्पिरेशन लिखोगे, सब आप पे छोड़ता हूँ. लेकिन एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पकड़ के रखो. Let 2024 not be a year of regrets. No regrets यार इस साल. ऐसा वादा करो. Push yourself. जो भी आपके काबिलियत के दायरे में है, जो भी आपके करने के काबिलियत में है और दायरे में है, वो कर दो. फिजिकल फिटनेस में क्या आप कर सकते हो, कर दो. रिश्तों में आप क्या कर सकते हो, कर दो. बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, वो आप कर दो. बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, वो कर दो, जो आपके दायरे में. एंड सबसे बढ़िया फैक्ट क्या है, मैंने आपसे शेयर किया था 4-5 एचएम पहले, दैट द ब्यूटी इज दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन आउटग्रो देयर वेरी नेचर दे आर बोर्न इन. हम जिस प्रवृत्ति में, जिस नेचर में हम पैदा हुए होते हैं, हम उसको आउटग्रो कर सकते हैं, उससे हम आगे निकल सकते हैं. कोई और जानवर, कोई और प्राणी, वो अपने ही नेचर में ही जिएगा, अपने नेचर में मर जाए. इट कैन नॉट आउटग्रो इट्स नेचर ऑन इट्स ओन. अगर करेगा, जिएगा भी, तो उसको बहुत बाहर से सपोर्ट लगेगा, या बहुत उसके साथ कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके शायद वो अपने नेचर से ऊपर उठ पाएगा. ये इंसान ही है जो अपने नेचर से ऊपर उठ सकता है. तो मुझे लगता है कि इस साल, let's take that call. Let's rise above our nature. Let's rise and ensure we live our life to the maximum. Now, what that maximum is, you decide. But 2024 में जब मैं मिलूं आपको दिसंबर में, और मैं आपसे पूछूं how was this year, you should all say, MG sir, this was the best year ever. This was the best year ever. Now, what will make this year the best year ever? वो आप डिसाइड करो. मैंने आपको एक थीम दे दी, वो आप अपने उसमें लगा दो. एक चार्ट पेपर ले लो, उसमें आप लिख दो that this is going to be the best year ever. And देखो फिर कैसा रहेगा.
So how is this theme for this coming year? हाँ जी, कैसी थीम है? That we'll make this year the best year ever. हम्म, बनाए इसको थीम. The best year ever. No regrets. Absolutely. Hmm. Let's make it the best year ever. एंड उसको बेस्ट बनाने के लिए जो करना पड़े आपको लगता है आप करो. ये अगर एंकरिंग हो गया ना, दैट यार दिस ईयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर एवर, और ये आपने रिमाइंड करने को, ये रियलाइज करने को, क्योंकि ये साल तो जाने वाला ही है ना. ये साल तो जाने वाला ही है ना, आपके रोके रुकेगा ना मेरे रोके रुकेगा. तो जब ये जो जाने वाला है, इसके जाने के एंड में हाउ डू वी वांट टू फील, दैट कैन वी कैन डिसाइड राइट नाउ, एंड देन we can decide right now, and we can live as this year unfolds itself, and we can live in a way wherein ये क्वेश्चन तो आने वाला ही है साल के एंड में, भाई साल कैसा था तुम्हारा. People are going to ask you, you will ask yourself, hey, how was this year? You should say, यार best year ever. अगर तुम ऐसा कह पाए, it was the best year ever. Imagine और कितना मजा आएगा if you can say this was the best year ever. इससे बढ़िया साल ही नहीं हुआ. अगर ऐसा हम कह पाए तो कमाल होगा. And that's my wish and my blessings for all of you, that you make this year the best year ever in all aspects of your life, not only in just one aspect, not only in the business aspect. And I'm just sharing this with you so that कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बिजनेस को लेके हम सोचते हैं कि ये साल अच्छा गया है बुरा गया. मैं कहता हूँ उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं यार करने. Life is much more. Not that business is not important. Life is much more than that. Yes, business takes a lot of time. It takes 8 hours, 10 hours a day, 12 hours a day. Yes, it will take. It should take. But उसका महत्व, उसका importance should not be measured by the time we give to it. तो अगर हम उसको 50% टाइम दे रहे हैं बिजनेस को, it does not become 50% important. It just remains as an important part. Because other aspects of your life are equally important, but they don't require that much of time. For example, your body. So your body does not require 10, 12 hours a day. It doesn't require. It requires only half an hour, 1 hour a day. But it has equal importance of that of business. Your family does not require 8, 10 hours a day. घर से निकाल देगी बीवी अगर तुमने 8-10 घंटे दे दिए वाइफ को हर दिन, तो परेशान हो जाएगी. वो कहेगी भगवान इसको भेजो ऑफिस. Maybe your spouse, your children require half an hour a day, 1 hour a day, right? They don't require more than that. But uski importance is as at par with your body and with your business, right? Your study, your upgradation, your जो भी तुम्हारी पढ़ाई है या कुछ hobby है, it doesn't require 8, 10 hours a day, but it requires maybe 15, 20 minutes, half an hour a day. तो आपको समझना है, there's one beautiful program which I used to take all spectrum. अभी मैंने family हम लिया 2 हफ्ते पहले, and family हम में I shared with everybody the 8 spectrums कि आपकी लाइफ कहाँ कहाँ आपने समय देना चाहिए. And I was sharing, and I'm sharing with you right now also from my life. This is what I've lived. This is how I live my life. So I've given time to my business. It's okay यार, नहीं बने दुनिया भर का number 1, but I live, man. I have no regrets. I have no regrets. And yes, there have been some goof ups also in life, ठीक है, but I did something ना, इसलिए तो goof up हुआ. And I don't know how many of you know, there is an online brawl happening, between India's best 2 motivational speakers. ऐसा मुझे सुनने में आया कि उन दोनों के बीच में द्वंद्व चालू है, and things like that. So last couple of weeks ये सब बातें चल रही हैं. And मेरा एक ex colleague who was heading my business, उसने मुझे एक बड़ा अच्छा सा मैसेज भेजा. And let me just read that message. हाँ, उसने मुझे बड़ा सुंदर सा एक मैसेज भेजा. And I felt
wow. He was with me some years back, and from a very wonderful background. He had joined Chrysalis, and he had joined in sales, and helping us grow our business and reach out to bigger avenues. And he was a fantastic person. And he was there with us for a few years. But then he was in sales. So sales में क्या होता है ना कि you are under pressure to bring in numbers and things like that. And since he had come from a different industry, he had come from construction industry. So एक proof भी करना था उसको कि मुझे numbers लाने हैं. Construction industry का background भी था. और एक वो भी था कि भाई मैं कर सकता हूँ, वो काबिलियत भी थी. तो he would keep on bringing in ideas and सर ऐसा करते हैं, सर ऐसा करते हैं. And he sent a message to me. I'll just read the message so आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. And this is in the background of the ये जो द्वंद चल रहा है, युद्ध चल रहा है between these two amazing guys in the online world. जो यूट्यूबर्स हैं, इनके जो द्वंद चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ. तो उसने भी सुना, उसने भी वीडियोस देखे होंगे उन लोगों के. And he sent me a message and he says, sir, in a world where motivational speakers and business coaches are laying a buffet of unachievable and false dreams, unrealistic lives and false promises and whatnot. And in all this, you have always stood your ground and you have helped people find real and meaningful transformations. I am so glad and privileged to have worked for you and the vision you have set. I remember we as a team coming up with ideas that were good for short-term profits and big sales, but you always demolished them, saying it's not aligned with my mission. And I'm glad, sir, that you did that. Chota muh badi baat, sir, but I wish you and Chrysalis abundance. The foundation of our Chrysalis is truth, and it's truly worthy of existence. I miss those days being with you. उसने ये मैसेज मुझे भेजा आफ्टर गोइंग थ्रू दैट द्वंद जो भी चल रहा है. तो फिर मैंने भी देखा, मैंने क्या द्वंद चल रहा है, क्या बातें हो रही है. एंड आई सेड आई एम एब्सोल्युटली एन ऑफलाइन गाय. मैं यार ये यूट्यूब वगैरह में इतना मेरा कुछ होता नहीं है, एंड दैट्स वन ऑफ माय फॉलीज. मेरी वीकनेस रही है वो हमेशा. बट आई एम काइंड ऑफ व्हेन आई लुक बैक एंड आई से यार ठीक है ना, अब नहीं नंबर 1 नंबर 2, बट आई हैव लिव्ड माय लाइफ बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माइंड. मैंने यार अपने जमीर को गिरवी नहीं किया बिजनेस करते करते. एंड पीपल हु हैव वर्कड विद मी, दे हैव अंडरस्टूड दिस. दो एट दैट टाइम दे फेल्ट कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ये धंधा ऐसा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये बिजनेस को ऐसे स्केल अप क्यों नहीं कर रहे हैं. मुझे नहीं करने थे, शॉर्टकट्स नहीं लेने थे. मुझे कुछ भी गलत सलत बोल के मुझे सेल्स नहीं करनी थी. और इन लोगों को प्रेशर था सेल्स करने का. तो ये आते थे नए नए आइडिया लेके मेरे पास कि सर ये करते हैं, वे करते हैं. ऐसे नो, दिस इज नॉट व्हाट वी आर. वी विल डू व्हाट वी आर. इट्स ओके इफ यू डोंट गेट इनफ बिजनेस. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू कि ये कब समझ में आता है, व्हेन यू लुक बैक. एंड ये लुकिंग बैक का तो हमारे पास मौका आने वाला ही है, बिकॉज हम सब आगे जा रहे हैं. तो पीछे मुड़ के देखने का मौका आएगा हर साल, और पीछे मुड़ के देखने का मौका आएगा. तो अगर मैं 25 साल के अपने बिजनेस लाइफ को देखता हूं, तो मुझे 25 साल का देखने का मौका है. कुछ का 2 साल का होगा, कुछ का 5 साल का होगा. सो हाउ डू यू वांट टू फील अबाउट इट? दैट्स द क्वेश्चन. एंड all said and done, I feel how you feel within, that makes a whole lot of difference. तो मैंने जब ये मैसेज पढ़ा, मैंने कहा यार you feel a lot taller than you are. तो ऐसा 2-3 इंच तो हाइट बढ़ जाती है, सीना 2-3 इंच चौड़ा हो जाता है. When you read some message like this, people have worked, people have been with you, people have pushed you to be on the wrong track, but you held firm. आप अपने पाथ पे अटके रहे कि हाँ ये तरीके से काम करेंगे. And then those people who had pushed you to be on the wrong track, they come and say, नहीं अच्छा किया आपने. तो मेरा आपसे ये कहना है कि you decide what is going to make this year an amazing year for yourself. The choice is yours. But let's not have regrets. Let's not have regrets. और कुछ ना कुछ तो करना नहीं जाएगा. But जैसे अभी एक और बंदे, this is on the positive side. एक negative side का आपको एक बताता हूँ कि one boy joined us a week back, and मैं travel कर रहा था. I could not be there on the day of his joining the office, and उसके expectations थे कि MG sir should be there to meet me, to receive me in the office, and I was traveling, so team was taking care of him.
तो उसको बड़ा बुरा लग गया कि अरे ये एमजी सर मुझे क्यों नहीं रिसीव करना है। तो उसने मुझे मैसेज लिखा, आई एक्सपेक्टेड यू टू बी देयर and you did not meet me on my first day of office. My career is to start, and then is this the way you you welcome new people in the organization? And उसने लिखा, बहुत कुछ लिखा, and I felt, हाँ ये तो यार गलती हो गई। उसको तो मैंने प्लीज मैसेज तो करना चाहिए था मुझे, और मुझे लगा कि आई विल कम बैक फ्रॉम माय ट्रैवल एंड आई विल मीट हिम। बट लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि भाई आप एमजी हो, आपको तो ऐसा करना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, I'll take note of that. Every feedback is a chance where you learn and you grow. अब हम कितना भी बोले नहीं, अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन है उसका, ऐसे कैसे मैं रहूंगा टू वेलकम हिम, मैं क्या फूलों का हार लेके बैठूं कि वो आए और नहीं। बट उसकी एक्सपेक्टेशन थी, इसका मतलब उसको ऐसा था कि ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसे ठीक है, we'll look into it, and next time whenever a new joinee comes in and becomes a part of Chrysalis, I will ensure either I'll be there in person or I'll send a video or I'll send whatever it is. कहीं ना कहीं वो एक चूक हो गई हमसे। तो you have you you miss out on things and you grow and you learn. But आप जितने रियलाइज आप करते रहोगे, जितना आपको एहसास होता रहेगा, उतना आप रिग्रेट्स कम करते जाओ। सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफ में रिग्रेट्स का, अफसोस का, यह है फैक्ट्स और हकीकत, जो हकीकत है और आपकी जो रियलाइजेशन है, ये बहुत डिस्टेंस हो गई। सो फैक्ट्स आर फैक्ट्स, they will they will not change. Your realization will make them powerful. Hmm? So Anji, what are your insights on what I have shared so far? What are your insights on what I've shared so far? Hmm? तो आपको एक कहानी सुनाऊंगा जाने से पहले, और उस कहानी को आप अपना एक यादगार बना लेना for 2024. Hmm. So what are your insights on what I've shared so far? I, what have you picked up? Realization is more important than facts. Realization, well, we cannot say it's more important, but facts without realization are dead things. They are dead. They don't make any difference to us. So I would not say more important, but they are equally important. So facts जितने important है वो तो हैं, but realization is equally important. Don't allow just facts to pass by. Do not regret at the end of your life. You need to wake up now. So every HM is a wake up call. Absolutely. Every HMI, in some way, the weekly shots, I want you to seek a better life for yourself. And that's why I always call Happy Minds attendees as seekers, that you all are seekers. आप आते हो कुछ सीख करते हुए, कुछ एरियाज में अच्छा बनने के लिए। Be original, what you are. Be frank. Don't go with flow of world. Good that you had this insight. Realization का realization हुआ है। The question, what good things we achieved in 2023 really was an eye opener. ऐसे ही करते जिंदगी निकल जाएगी यार, and then we will keep on thinking about क्या पाया क्या खोया. So let us be as much conscious. जितना रियलाइज करते रहोगे फैक्ट्स के साथ, उतनी जिंदगी और आप जीने के लायक बन जाओगे। जितना रियलाइजेशन दूर रखोगे, फैक्ट्स तो रहने वाले ही हैं, तो रियलाइजेशन जितना दूर रहेगा। कुछ लोगों को रियलाइजेशन समय निकलने के बाद होता है, अरे यार तब ये कर लेते, अरे यार तब ये कर लेते। कुछ का रियलाइजेशन कुछ बीच में हो जाता है, तो वो कुछ करने योग्य रहते हैं। कुछ का रियलाइजेशन इज along with facts, right? So I'm saying 2024 year, 2024 जो हमारा साल है, let the facts and realization be together. Celebrate realization to rectification. Absolutely बढ़िया, जो करना है वो करना है, पर कभी कभी क्या है ये भी देखना है। एब्सोल्यूट, कभी कभी नहीं, हर दिन रात को
अभी हर दिन रात को बैठो, आज का दिन कैसे जिया, जैसे हम अभी ये 2023 का एनालिसिस कर रहे हैं ना, मैंने आपसे पूछा व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ in the last 1 year. Same way you ask every day, before you hit your bed, before you close your eyes, before you sleep, before you say goodbye to the day, ask yourself, भाई आज क्या किया, आज दिन भर में 2-3 बार खाना खा लिया, आज आपने 24 घंटे जी लिए, आज आपने करा क्या फिर? And you will see that this realization is there on a daily basis. Let the realization not happen after 6 months, after 1 year. Let it happen every day, and you will see a life which you will live. So powerful is realization. It can make you live your life in a very powerful way. यदि एमजी का हो साथ तो ये बेस्ट ईयर होगा यार। अरे मुझे खुश कर देते हो तुम लोग, मेरा साथ तो है। क्वेश्चन इज तुम्हारा तुम्हारे साथ साथ है कि नहीं? आर यू विद योरसेल्फ? दैट्स द क्वेश्चन। ट्रुथ इज बिटर, accept it and move ahead with improvement. Absolutely. 2023 was also very wonderful by joining Have Your Minds and learning a lot of things. Continue learning, continue realizing what more can be done, continue realizing what more you can produce from your side. एक बार एक चूहा जो है, एक कहानी to end 2023 Happy Minds, to start in 2024. फिर मैं आपको एक साल बाद मिलूंगा, 2024 में मिलूंगा। एक बार एक चूहा जो है वो बड़ा परेशान रहता है। लिटिल माउस कहता है जहां जाओ तो बिल्ली आ जाती है, उसके चक्कर में इधर भाग उधर भाग, यहाँ छुप वहां छुप। और वो बड़ा भक्ति होता है प्रभु का, तो प्रार्थना करता है, बड़ा दुखी होता है कि सेविंग हिज लाइफ ऑल द टाइम। तो कहता है भगवान थक गया हूं, मैं हार गया हूं। तो वो तो क्या हुआ? अरे ये बिल्ली के चक्कर में मैं इधर भागता हूं उधर भागता हूं, मतलब इस जिंदगी जो है इससे बचना ही हो गया। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इससे बचने के लिए जी रहा हूं, तो मुझे आप ये जिंदगी से मुक्त करो। तो कहते क्या करना है? कहता मुझे बिल्ली बना। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अभी तू बोल रहा है तो तेरे को बना देते हैं, तूने इतनी भक्ति करी है। तो भगवान उस चूहे को बना देते हैं बिल्ली। फिर वो बिल्ली बन के चूहा जो है वो निकलता है बाहर, बड़ा खुश, कहता है अभी देखो कौन बिल्ली मुझे तंग करेगी। तो कोई बिल्ली तंग नहीं करती, क्योंकि बिल्ली से बिल्ली कहाँ लड़ेगी। लेकिन सड़क का टॉमी है, वो तो उसको तो बिल्ली दिख गई, तो वो बिल्ली के पीछे भागा। और बिल्ली फिर ये जो चूहा जो बिल्ली बन गया था, ये फिर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, फिर ये जो चूहा बना बिल्ली जो है ये थक जाता है, कहता है ये क्या चल रहा है, बाहर निकलो तो कुत्तों का डर, कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहूंगा। फिर वो प्रार्थना करता है भगवान को, और भगवान आते हैं, फिर बोलते क्या हुआ? कहते नहीं मैं थक गया हूं, ये सड़क के हर कुत्ता जो है मेरे पीछे पड़ जाता है। आई एम जस्ट सेविंग माई लाइफ फ्रॉम दीज डॉग्स एंड दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट। कहते करना क्या है तेरे को? कहते मुझे डॉग बना दो। भगवान ने ठीक है। सो दिस माउस टर्न कैट टर्न इनटू अ डॉग, और ऐसे फिर जिंदगी जीता है, तो फिर कोई और जानवर मिलता है, फिर ऐसा करते 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 वो भगवान से कहता है भगवान मुझे शेर बना दो यार। अब भगवान भी जो है ना इतना कन्वर्जन कर करके भगवान भी काइंड ऑफ थक गए थे उसके साथ। जब लास्ट में उसने बोला कि मुझे शेर बना दो आप, तो भगवान ने कहा आपको बना तो दूंगा मैं, लेकिन तेरा कुछ होने वाला नहीं। कहता ऐसे क्यों? भगवान शेर तो दुनिया का सबसे फेरोशियस जानवर है और सबसे खुकार जानवर है। मैं शेर बन गया ना, फिर मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा, आप मुझे शेर बना दो। तो भगवान कहते हैं यार तेरे को बना तो दूंगा मैं शेर, लेकिन तेरा जो दिल है, तेरा जो जिगर है, वो चूहे वाला ही है। तो तो कितना भी बड़ा जानवर बन जाए, तो अंदर से चूहा ही है, तो तेरा कुछ होने वाला नहीं। तो मेरा आपसे तो मेरा आपसे ये कहना है कि when you pray this year, when you pray in the coming year, so don't pray for less problems, don't pray for less cats and less dogs around you, right? Don't pray for that. You pray for God, make me a strong mouse. Pray for you becoming strong, you becoming powerful. Don't pray for reducing problems. अगर कुछ करना ही है तो फिर अपनी काबिलियत पे काम करें और अच्छे बने, अपने फील्ड में इतना स्ट्रांग बने कि साला बिल्ली भी आ जाए तो अपन उसको हैंडल कर ले। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू वर्क ऑन, because the world will not change
because we wish the world to change. We got to work on ourselves. So 2024 will not be the best year ever for us, just like this. 2024 will be the best year for us only when we work on ourselves. चाहे हम चूहे हों, चाहे हम बिल्ली हों, चाहे हम कुछ भी हों अपने इस पूरे जिंदगी के उस कार्यकाल में, हम जो भी हों, अगर हम चूहे भी हैं ना, तो बढ़िया चूहे बनेंगे, मजबूत चूहे बनेंगे, खुखार चूहे बनेंगे. Do you get that? And that's what I wish for all of you. Let's pray. Let's strive for making ourselves very strong. Let's do that. हाँ जी, कहाँ हो? And with this, I bid adieu to this year's last Happy Minds. So make sure you create a story. तो मैंने तो आपको एक कहानी बताई. आपके पास 365 दिन है. आपके पास 365 दिन है अपनी कहानी बनाने के लिए. तो 365 दिन के बाद आप मुझे क्या कहानी सुनाओगे? आप दुनिया को क्या कहानी सुनाओगे? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद को क्या कहानी सुनाओगे 365 दिन बाद? वो सोचो. More than the world, more than me, what story you will tell? What if your child was to come and ask you, पापा, मम्मी, ये पिछले 1 साल में आपने किया क्या? कुछ है बताने लायक? मुझे बताओ ना. What if your child was to ask? What would you like to tell your child at the close of 2024? ठीक है? Sunlight filming you fairer ever. I'm just facing the rising sun. Thank you for noticing that. I'm just facing the rising sun, and it's such a beautiful sight from where I'm sitting, the hotel room, and the sun rays hitting on my face. चलो, आज का ये HM यहीं पर विराम लेते हैं. And take care of yourself. Build, hold on to the culture. I'm here. I went to the light show yesterday. कल बड़ा मूड खराब हुआ यार. Just want to share one story with all of you. कल हम लोग light show, light and sound show में गए यहाँ पर. तो वो जो नरेशन था, वो तो था बच्चन साहब की आवाज में, लेकिन उन्होंने जब रेफर किया तो उन्होंने छत्रपति नहीं बोला, उन्होंने महाराज नहीं बोला, सीधे नाम बोला. और ऐसा अंदर से खून खोला. मैंने कहा हमारे महाराष्ट्र में आके जरा नाम लेके दिखा दो. ऐसी नहीं चलेगा. छत्रपति लगाओगे तभी, बिना उसके कैसे नाम बोल सकते हो महाराज का? एंड बट दैट्स द वे इट वाज. तो मैं सोच रहा हूँ लेटर लिखा जाए राजस्थान गवर्नमेंट को कि यू कैन नॉट से द नेम लाइक दैट. यू कैन नॉट. तो आप महाराणा प्रताप बोलोगे ना, यू कैन नॉट जस्ट से महाराणा नहीं लगाओगे आप. यू कैन नॉट से द नेम लाइक दैट. दे डिजर्व दैट. ये उनका हक है, उन्होंने कमाया है वो. एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट देयर. तो हम लोग जितने भी हम लोग आए थे, हम लोग इतना ऐसा अंदर से खून खाला. हमने वहां पर फिर ललकार, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हमने ऐसे ललकार लगाई कल वहां पर जाके. तो सब जस्ट सेइंग, hold on to your culture, stand up for your culture, stand up for what should be stood for, and that's what we wish for each other, and that's what I wish for all of you. So God bless you, and see you next year for the 1177th Happy Minds. God bless you. God bless you all. Thank you. Last HM में स्वाति कोयटे ने 3 बार लिखा नमस्ते सर, और मैं स्वाति का नाम पढ़ना भूल गया. तो स्वाति, मैंने आज आपका नाम ले लिया, और बाकी सबका आज नाम जो है ना बहुत दूर है, तो वो मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है. But love you all for I'm reading your comments because they are bolder, but आपके नाम जो है ना बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं. तो let me get this closer to my face, then I can read. और वो लाइट आ रही है सामने से, तो
God bless you, and thank you for wishing me Happy New Year.